शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Good morning. प्यारा बाबा ज्ञान का सागर Beloved, beloved Baba, the ocean of knowledge, ocean of love, प्यार प्राप्त करने के लिए in order to claim his love, शरत करना होगा। एक होता है प्यार लेना, थोड़ा इको है इसमें, इको को आप देना, सुनने में लेना और देना। लेना कैसे है और देना कैसे? तो प्यार देना है, we have to see how we can take, claim love, and give love. और प्यार देने की विधि क्या है? What is the method to give love? जिससे प्यार होता है उसको जो पसंद होता है वो करना, When there is love, तो प्यार लेना। in order प्यारा to बाबा take को love, प्यार we करना, fulfill उसको क्या the one with whom we have love, fulfill all his desires. पसंद है? Which thing Baba likes? बाबा को पसंद है कि मेरे बच्चे Baba is सदा pleased सेवाधारी बन करके सेवा करते। when his children बाबा कहता है become मैं भी serviceable सेवा के लिए आया and always do service. Baba says सेवाधारी he also की comes विशेषता to ये serve, है to do service. कि वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाबा भी कहता मैं भी सदा सेवा पर हाजिर हूँ। Baba says he is ever कोई present भी बहाना on नहीं, service. There should not be any excuses for सेवाधारी है service. तो सेवा में कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। We are sevadaris, we are servers. करेंगे There should not be उतने ही हम बाबा के any प्यारे excuses for service. The more जैसे लौकिक में भी we do service, the more we will माँ be बाप के loved प्यारे वही by बच्चे Baba. होते हैं। In the Laukic world also, बच्चे बहुत अच्छी कमाई करते हैं, the child who अच्छी earns पढ़ाई good करते हैं, is loved by the parents. बच्चे प्यारे लगते हैं। Would the child who doesn't earn good ऐसे बाबा be भी loved कहता है by the parents? No. बाबा को भी In the बच्चे same अच्छे way, प्यारे Baba लगते हैं। says, Baba बच्चे loves बहुत कमाई करते हैं। such children कमाई who कैसे है? earn सेवा में जितना a हो good सके income. Income means कमाई income will come by doing good service. सेवा सेवा। कल So, भी बाबा ने कहा service, service, service. Yesterday also Baba mentioned about uplifting those who defame us. वो Today बादल Baba जैसे says we have to आए become और गए, clouds. चला गया, बरसा ही नहीं है। बरसेंगे तो धरती भी हरी भरी होगी और अगर बरसेंगे ही नहीं तो Those clouds who धरती भी हरी rain, भरी who नहीं हो shower सकती। are of some use. धरती Otherwise, को होगी there won't be any use of clouds who just come and go without raining. बाबा को अति प्रिय लगते हैं। आज की मुरली बाबा विशेष तुम बच्चों को बादल बन करके Today Baba is बरसते mentioning about the children becoming clouds, and बरसते रहना है। those children should go on raining, वाले बादल जो ज्ञान का पानी भरे हुए go on raining the jewels of knowledge. ऐसे बादल बनना है। सर्विसेबल We बच्चे have to become such clouds. ऐसे सर्विसेबल बनना है। How to become serviceable children क्या शब्द who are loved by the Father. हराम है किसके लिए? जो हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं। सेवा में ही आराम। देखो
कमाई जो करते हैं व्यापारी होते हैं उनके कमाई में ही क्या होता है, आराम होता है। कमाई के समय उनको नींद नहीं आता है। Those who earn a कमाई good में ही income आराम है, जितनी कमाई won't होगी feel any tiredness. जितनी खुशी होगी उतना आराम मिलेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी There is rest itself in कमाई their earning an income. Never feel tired. रहो, बादल बन करके बरसते रहना। सुनते बाबा की मुरली। Murli of the आज 11 की मुरली 11th of August. मुरली का सार है मीठे बच्चे, Sweet children, बाप दादा की in order लेनी है, to be loved and remembered सभी से by Bab Dada, become serviceable. बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। When your intellects are full of this knowledge, प्रश्न है rain it on others. कौन सा Question नशा is, भरे हुए बादल due to which उड़ा ले intoxication are the clouds that are full and ready to rain, unable to rain? उत्तर है Answer is, अगर फालतू दे अभिमान का नशा if there is some unnecessary intoxication of body consciousness, the clouds that are full are blown away. सर्विस करे। Even if they do rain, instead of doing service, नहीं they do disservice. उनसे योग नहीं तो If there is no love for Baba खाली or no yoga से खाली with him, then अनेक although का कल्याण they do have this knowledge, it is as though they are empty. How could such empty clouds benefit many? बाकी Om थोड़े Shanti. बादल बचे हैं, Only a few clouds now remain. कम हो जाती है When the rain decreases, the clouds over the ocean disperse. ठंडे हो जाते, They become empty. ऐसे यहाँ भी ठंडे हो जाते। In the same way, here too, बादल उनको कहेंगे, you clouds become उनको कहेंगे, cold. बादल उनको कहेंगे Clouds are those जो रिफ्रेश होकर who refresh जाकर themselves बरसा बरसा। and then go and rain on others. अगर कोई बरसात नहीं If someone doesn't rain, तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे, he or she can't be called a cloud. ये ज्ञान बादल है, These clouds are वह है of पानी knowledge, बादल। and those clouds ज्ञान के are बादल of water. The clouds of knowledge come सीजन होती है, when it is their season. ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, जब बाबा आते हैं भरपूर होते हैं और फिर जाकर के बरसते। जब सीजन होती है रिफ्रेश हो They come जाकर और and refresh themselves and then go and refresh others. बादल भी नंबरवार होते हैं, Clouds too are कोई number-wise. जोर से बरसते। Some rain very heavily. बादलों का काम ही है बरसना, It is the duty of clouds to rain जाए हुए पौधों को रिफ्रेश and refresh the plants that have wilted. में पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, Those who are full of knowledge ज्ञान don't hide away. रह नहीं सकते। तो बाबा कहते छिप कर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। They don't even need Baba's directions. इनको सर्विस का शौक है, वो इंतजार ये नहीं करते हैं कि बाबा मुझे कहे तो मैं सेवा करूं। तो सर्विस से बुलाता है, Those who are serviceable would not wait that Baba give them the direction to go and serve. No, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। they don't need, बादल they don't even need Baba's directions. They are clouds. They only come to fill themselves and then rain on others. शब्द करना Whatever you see
that a land is very hard and barren, you should go and make it green. जानते हैं कौन सा सेंटर ठंडा है किस Maharathi children know all the centers very well. They know which centers are still slack and in which centers some children have more storms. Maharathi, serviceable children know this very well. Baba always says, give my love and remembrance to the serviceable children. The good clouds will go on service. Not everyone explains in the same way at the exhibitions. The main thing is that the God of the Gita is the incorporeal Supreme Father, the Supreme Soul, and not corporeal Shri Krishna. A very good method of explaining is required. Throughout the day, think about how to go and awaken others. All are in extreme darkness. Continue to explain with love to everyone about continue to explain with love to everyone about the two fathers. समझाने की भी युक्ति बाबा बताते क्या क्या समझाना पहले बाप का परिचय देना भाई दो बाप है आत्मा का परिचय देना तो सबको प्रेम से समझाते रहो दो बाप है One is a limited father and the other is the unlimited one. Only the unlimited Father is called the purifier. You children have now received intellect means wisdom. Although people of the world have a lot of splendor, although people of the world have a lot of splendor, their intellects are like stone. पत्थर बुद्धि है बाप को ही नहीं जानते ना कौन है बाप बाप किस लिए आया है क्या करना है जानते ही नहीं तो बाबा कहते हैं परंतु पत्थर बुद्धि है बाप खुद कहते हैं The Father himself says, I even have to uplift those who call themselves sages, etc. They too don't know the Creator or creation. In the Golden Age, this knowledge will have disappeared. However, no one knows this. This knowledge is not in the scriptures. No one can receive salvation through them, means the scriptures. There is so much regard for the Gita, but that is the path of devotion. Father is the purifier. He sits here and teaches you Raj Yoga. Therefore, a new world is definitely required for the kingdom. Only the Father comes and teaches you Raj Yoga. You know this now. He is now once again explaining to those whom he explained to in the previous cycle. Only then they will understand. It isn't
that same war takes place all the time. That would last for 8 to 10 years and then stop. According to the drama, the bombs that have been made are not just for keeping. The golden age will not come without there being the death of impure human beings. You also have to explain how peace is established. It is the task of the Father alone to establish peace and make this world elevated. Father says, break your intellect's yoke away from everyone else and connect it to the One. Break your connections with everything visible, including your own bodies. We now have to return home. Therefore, remember the home. You now understand that this is a land of death. We are listening to the story of immortality in order to go to that land of immortality. Deities are called human beings with divine virtues. There cannot be a single one like that here, like the deities. They have written so much defamation of Sri Krishna. Nothing enters their intellects. You children now have to make effort very well and imbibe divine virtues. It has been explained to you what the divine virtues are. You must definitely become completely viceless. This is the main and foremost virtue. You can see how impure ones everywhere bow down to those who are pure. In the golden age, everyone is pure, and so there are no temples there. They build temples when they become worshippers. Those who were pure have become impure. This is the last of many births. The Father says, forget this whole world and these whole bodies. This whole world now has to end. It won't take time for it to be destroyed. This whole world, wealth, prosperity, and treasures, etc., are all about to end. Only a few more days remain. No one in the world knows that this whole world is to be destroyed. You tell everyone this, but they also have to have that faith. All of this can only sit in their intellects when they consider these to be the versions of God. Father says to you children, consider yourselves to be souls and remember me, your Father.
You children know तुम that the संसार unlimited Father is teaching you Raj Yoga. ना He is the Father of all souls. समझे तब बुद्धि All are brothers. भगवान सुनाते हैं भगवान बाजे In heaven, बुद्धि में बैठे all brothers जो बाबा were करेंगे वो happy, करेंगे भी whereas बुद्धि में ही नहीं बैठा होगा in the Iron Age, कैसे करेंगे all brothers are आप तुम बच्चों को unhappy. कहते हैं All souls are now residents of क्या hell. कहता है रोज कहते हैं बाबा हैं हाँ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद They would not be just souls. कितना They कहते also have to have कितना bodies. समय आत्मा समझते है ना रोज ही कहता है ना बाबा आत्मा समझो बाप को याद करो आत्मा समझो Your children now तो have to अपने become को soul आत्मा conscious. समझ मुझ बाप को याद करो And it is this that requires effort. का बाप हमको राजयोग It is not like going to your auntie's home. आत्माओं का बाप This stage can only become firm में सभी when you first have the faith that the Supreme Father, दुखी है the Supreme Soul, is सुखी थे teaching you. सभी ब्रदर्स दुखी है सभी आत्माएं नरकवासी Shri Baba comes here आत्मा तो to नहीं teach you through this body. अब तुम बच्चों को We hear it क्या करना through these bodies and imbibe है it. काम देता है We shed bodies आत्मा अभिमानी and take others according to our sanskars. आत्मा अभिमानी It is just like the example that Baba gives of those in the army. अभिमानी बनने में ही क्या है हैं? They take the sanskars of battling away with them, मेहनत तो करनी पड़ती है ना सारा दिन and so they are pulled there in their next birth. मैं वो करता तो बाबा कहते क्या करना है You now know the इससे father's sanskars. आत्मा हूँ मैं आत्मा ये कर You know what sanskars बाबा कहते the incorporeal, मासी का unlimited Father has. सहज नहीं है ये अवस्था पक्की He is the seed of the human world tree. कब होगी ये अवस्था He is the purifier and पक्की चाहिए the ocean of knowledge. आत्मा Only अभिमानी He comes and purifies us. हाँ, क्या युक्ति चाहिए ये अवस्था तब पक्की होगी Father says, कब पक्की होगी constantly remember me alone, हैं? and your sins of many ये births अवस्था will तब be पक्की कर absolved. सुनो बाबा सुनाते ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं ये निश्चय हो Otherwise, भगवान पढ़ाते हैं there will have to be भगवान a कहते हैं lot कि of अपनी punishment, आत्मा and no status will be received. शिव बाबा आते ही इस शरीर द्वारा पढ़ाने हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं और धारण करते हैं You children चारों now know एक शरीर that Baba धारण is showing you जैसे a बाबा very easy साल path. मिसाल देते He says, लड़ाई Man Manabhav. मिलिट्री वाले संस्कार वही लेके This आते हैं। expression जन्म में is भी also संस्कार in the Gita, आते हैं फिर जाके but the meaning of it is not understood. लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है शिव बाबा का संस्कार क्या है Father says, constantly मालूम है remember me alone. निराकार बेहद Renounce में क्या your bodies and all क्या संस्कार bodily को religions. पावन बनाने का Consider yourselves to है be souls मनुष्य का भी
and remember me, the Supreme Father, the Supreme Soul. सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। आप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। Remembrance is also called the fire of yoga. पद कुछ भी नहीं मिलेगा, तो गाएंगे तो पद क्या मिलेगा, इसलिए कहते मुझे याद करो। Yoga is a common word. It is also mentioned in the Gita, but सहज रास्ता बता दे, because they have put Sri Krishna's name, they have created extreme darkness. मुझे याद करो तो सारा कल्याण हो जाएगा। ये अक्षर गीता में भी है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझ। Now, when you explain to them, माँ में they say that it is just your imagination. अपने को They don't understand anything. परम पिता परमात्मा को They don't want to claim the inheritance. याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। First of all, they have to understand that the unlimited Father is the Father, the teacher, and the Sadguru, घोर अंधकार and that He is teaching us. समझाते हो तो कहते हैं There has to be this firm faith. कुछ भी पता नहीं पड़ता। It is impossible for a new person to have this faith instantly. कि बेहद का बाप Some new ones are sensible, and so they are able to understand. और Some don't even जब ये समझ Some don't even want to come here. They don't understand anything at all. वह हमको पढ़ाते, It doesn't enter their intellects at all. कौन पढ़ाता है हमको? There are so many BKs. बेहद का बाप वो हमारा टीचर है। Therefore, they must definitely have received their inheritance from the Father. नए आदमी को This is a family. कोई कोई नए The name that is written is तो झट समझ जाता, Brahma Kumars and Kumaris. कोई तो यहाँ And आने so, ही नहीं चाहते, this is a family. कुछ भी समझते The नहीं। family of जरा भी Prajapita Brahma is so large, and yet ढेर भी के this doesn't sit in the intellect of हैं तो anyone. सिद्धों को बाप से वर्षा मिलता होगा। When someone asks बच्चे बन गए हैं, what your aim and objective is, tell him that it is written कुछ तो मिलता on the board outside. तो बाबा कहते इतना Prajapita, Brahma Kumar and Kumaris. है फैमिली। Therefore, this is a family. ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ We receive the inheritance from our grandfather. हो गई ना, Shiva Baba creates creation through the mouth of क्या हो गया? Prajapita Brahma. भाई बहन माना ही फैमिली। Therefore, he is the creator. ब्रह्मा की फैमिली कितनी He creates heaven, and so कितनी बड़ी he would definitely give you children the inheritance of heaven. तो पिता है उसकी तो सारी सृष्टि क्या हो गई? So this is हो गई इतनी a बड़ी family. प्रजापिता ब्रह्मा That की is फैमिली the father, sons, परंतु daughters, and the grandfather. आ नहीं सकती। That is Brahma and also Shiva. पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या सुनानी चाहिए? एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा कहते कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या सुनानी चाहिए? That is Brahma and also Shiva. सुनो वो क्या सुनाना। He is the creator. He is
incorporeal. ऑब्जेक्ट क्या है बोलो So how does He give you children ऊपर लिखा your inheritance? He gives you your inheritance through Brahma. प्रजापिता Explain this very clearly. Tell them तो क्या हो गई this is your father's home. ये हमारी क्या है This is also called कुंडली है the sacrificial fire of this knowledge से of वर्षा मिलती Rudra. है We are से Brahmins. भाग्य से वर्षा मिलता है प्रजापिता No one apart from the Father शुभ can teach करना Raj Yoga. तो वह क्रिएटर ठहरे स्वर्ग रस It says in the Gita, Man Manabhav, that is, constantly remember me alone. बच्चे हुए Therefore, भाई बहन हुए we only remember that one Father. बाप बच्चे बच्चियां और दादा On the path of devotion, they sing, बाप बच्चे Baba, बच्चियां when you come, I will surrender myself and belong to you. भी है शुभ I, a soul, will shed this body and go back with you. कैसे देगी When I belong to you, का वर्षा I will definitely go back with you. जाना When a girl gets married, she goes with her bridegroom. ये उनको बोलो क्या बोलो Shiv, the bridegroom, says, I will liberate you from this sorrow बाप का घर है and take you to the land of happiness. का घर है बाप का घर है उनको बोलो Then हमारे बाप का घर फिर each of you will rule the kingdom कैसे according to your own effort, भगवान को मात पिता कहते to the extent मात पिता that you imbibe the wealth of this knowledge. बाप का घर You will accordingly claim a high status. का घर है शिव बाबा हमारा पिता है The young daughters are doing service. मात पिता They have to explain to the great scholars and pandits. इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान Therefore, there has to be great interest. आपके सिवाय और कोई राजयोग सिखा ना सके In wrestling, में भी the issue challenges to wrestle with one another. तो हम उस एक Serviceable children should not sleep comfortably. जाते हैं It is कि बाबा a sin to rest. Those who consider themselves to be Maharathis should not sleep comfortably in happiness. शायद इस जन्म में नहीं गाया पहले तो गाए के आए होंगे ना Constantly tour around गाया था to do service. हमारी जन्म ये तो कॉमन बात है ना कि भाई भगवान आएगा भगवान के बच्चे बनेंगे तो Nowadays, Baba is having many exhibitions, sets made. बारी जाएंगे Invite eminent people. If not now, they will come at some time later on. को छोड़ आपके साथ चली जाएगी Continue to बनेंगे awaken sages, आपके holy men, and great souls. जाएंगे However, the one करते हैं who speaks to them should be a Maharathi. कि चला जाएगा सजनी को छोड़ के Those who don't have yoga with the Father लेने के लिए and don't love Him are like लेके ही empty clouds. तो बाबा कहते हैं, सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएगा What would they शिव साजन be able to do? क्या कहता है शिव साजन You understand that शिव साजन uneducated ones तुमको will bow down to those who are educated. ले जाएंगे Each one of you can understand for yourself पुरुषार्थ to अनुसार what extent राजा ही कर you are educated. जो जितना ज्ञान धन धारण करे That will be shown उतना by पद the service you do. छोटी छोटी If clouds are full and yet don't rain, बड़े विद्वान of what use are those clouds? शौक होना चाहिए Each one has to have होती his own understanding. चैलेंज देते हैं If there is some इनके
useless intoxication of body consciousness, सर्विस your high status will be lost for all time. सर्विसेबल बच्चों Baba has so much interest in doing service. बच्चों को Explain to the आराम government से सोना and asks them for a hall where we can do this spiritual service to change humans into deities. ना ना आराम से नहीं सोना है तो कैसे सोना भाई सोने की विधि क्या होगी The Father has come to teach you बाबा कहते Raj Yoga. आराम से नहीं सोना है However, क्या you must explain with tact. मतलब यही है बाबा का ये सो गए निश्चिंत होके कोई पढ़े परवाह नहीं है ऐसे नहीं नींद ऐसी होनी चाहिए एकदम Those जागृत अवस्था who don't know how to give lectures के लिए जब भी will not be able to explain. They will not be able to claim a high status. तो उनको कितना भी कोई भी सेवा के लिए बुलाओ बुलाओ तो कौन आते ही नहीं नींद ही नहीं खुलती है और कई हाँ बस तुरंत तो बाबा कहते ऐसी नींद होनी चाहिए सर्विस सेबुल बच्चों को आराम से सोना नहीं The Father has come to teach you Raj Yoga. However, योगी you must explain with tact. अब कहते बाबा महारथी Those समझते who हैं don't know how to give lectures will not be able to explain. They will not be able to claim a high status. Those who do service will be able to claim a status. ना तो कैसे सोना है सुख से नहीं सोना है तो कैसे सोना है भाई जब बुलावा आवे तब तैयार सर्विस पर चक्का बिठाना सोने का मतलब बाबा का ये है नींद नहीं करनी वो नहीं है नींद तो करनी है शरीर को नींद तो चाहिए लेकिन बाबा का जो मतलब है कि जब भी सेवा मिले तब हम एवर रेडी आराम से नहीं अभी तो मेरे को ये है सोना है आराम करना है ये करना है सर्विस है तो सर्विस सर्विस में बहाना नहीं लगाना Those who do service will be able to claim सुख से a सोना status. सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो बाबा कहता है परंतु बात करने वाला Those who do service will be able to claim a बाहर से status. लोग नहीं यार नहीं तो जैसे कि खाली बादल है वे क्या करेंगे ये तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे Write to eminent people and say हम कहाँ that there तक cannot be benefit for Bharat and this world अगर without बादल this भरा knowledge. हुआ है Write to eminent people and say बादल ही that there cannot be benefit for Bharat हरे को अपने and this world without फालतू this देह knowledge. ज्ञान के नशे में Education के is the main thing. अपना ऊंच पद हमेशा के लिए Lakshmi Narayan देंगे also claimed their status जहाँ through हम ये their education. They studied Raj Yoga in their previous birth. ये राजयोग सिखाने लेकिन We are जिन भी also लोग now समझाने studying this जो here. वचन ही नहीं जानते Students in a वे थोड़ी school समझा सकते understand that ऊंच they पद will पा take a particular सकते नहीं exam सकेंगे and जो then सर्विस become something. बड़ों बड़ों को लिए This knowledge इस that नॉलेज you receive is बाबा not का for this world. कल्याण
You are studying to create a reward for your future 21 birth. Those people study to receive happiness in this birth. अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं हम भी Study यहाँ पढ़ रहे हैं that worldly knowledge too, but at the same time, take these teachings. There is no need to be afraid of anything in this. Why should you not take this spiritual knowledge? You should take the pictures and go and explain to others. Tell them this knowledge is essential for everyone. However, some children are not yet that alert or active. They are trapped in their jobs and responsibilities. If someone is free from bondage, he or she should become busy doing service. Not everyone will follow Srimad. Maya causes a lot of confusion in between. Some children have a lot of interest, but they don't have the intoxication to go and benefit many others. Baba also wonders, since you have now become an adult, why do you choke? You can say that you have to uplift Bharat. We have to do true service and change human beings into deities. Baba is very amazed that some don't have this intoxication. This is why Baba says you have Raju intellects. You have a very good chance. There are even those who have a lot of ego about their knowledge, and so they also continue to do a lot of disservice. The jaggery and the bag that hold the jaggery know. They are the omens of the eclipse of Rahu. The omens अभी बच्चे से बालिग हो गए समझदार हो गए बड़े हो गए तो क्या करना चाहिए भागना चाहिए सेवा के लिए सदाई बचपन थोड़ी रहेगा the omens of Jupiter are removed, and they are then the omens of the eclipse of Rahu. 1 minute they are moving along very well, and the next minute they are bad omens and they fall. भारत का उद्धार करना है सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है बाबा को तो वंडर लगता है क्या वंडर लगता है भाई कौन सुनाएगा बाबा को वंडर लगता है क्या वंडर लगता है हैं? क्या वंडर लगता है बाबा को सुनो बाबा को They are वंडर लगता the omens नशा ही of the नहीं eclipse of Rahu. इतना समझा The omens of इतना Jupiter कहता हूँ are कोई removed, बच्चों को नशा नहीं and they are then भाई चढ़ाना the नशा omens of the नहीं eclipse चढ़ा of Rahu. बादल भरे नशा नहीं चढ़ता इसलिए बाबा कहते हैं क्या 1 minute they are moving along very well, है भाई क्या कहता क्या टाइटल मिला होगा and the next minute they are इसलिए bad बाबा omens कहते हैं and they fall. इसको नशा नहीं चढ़ता तो सतो प्रधान होंगे ना उनको क्या होगा नशा चढ़ेगा ये रजो बुद्धि है चांस बहुत अच्छा है ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का भी घमंड बहुत है Your children ऐसे भी हो जाते हैं have to be very courageous. तो बहुत होशियार हो You have to take the initiative and fulfill the responsibility. परंतु सर्विस भी बहुत करते हैं अभी उल्टा We will definitely make
this Bharat into heaven. तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने और न जाने राहु का ग्रहण बैठ जाता है बृहस्पति की दशा उत्तर You have to take the initiative and fulfill the responsibility. देखो तो ग्रहचारी We will definitely make this Bharat into heaven. दूर होना चाहिए सुना क्या कहा बाबा ने बहादुर होना चाहिए क्या करना चाहिए आज क्या कहा बाबा ने बादल भरकर बरसने चाहिए Your religion बहुत is to बहादुर make चाहिए the residents of hell सर्विस में सदा लगे into रहना the residents of heaven, हम इस भारत को स्वर्ग बना and to make corrupt beings elevated. तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी Baba बनाना। makes you very intoxicated, भ्रष्टाचारी बनाना। but the intoxication rises in you children. Number wise, तो क्या होता है Baba makes you very intoxicated, but the intoxication rises in you children. Number wise. चढ़ता है अच्छा मीठे 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 सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. नमस्ते रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. नमस्ते Essence for inculcation. First point, become free from bondage and do true service of Bharat. Do spiritual service and change human beings into deities. Don't have any ego about your knowledge. Maintain spiritual intoxication. Second point, let your intellect have faith and first make your stage strong. Break away from whatever you see, including your body, and connect yourself to the one Father alone. Blessing is, may you be a true server who makes your doing and speaking the same, and thereby does good quality service. Pay constant attention to first doing what you speak of. It is easy to say something, but it is much harder to do it. The fruit of hard work is good, but if you tell others to do something, but you do not do it yourself, then together with service, disservice is also seen. It is the same as when a drop of poison is put into nectar. The nectar becomes poisonous. In this way, no matter how much service you do, one little mistake will finish that service. जैसे अमृत के बीच इसकी एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत One little mistake will finish that service. So first of all, छोटी सी गलती pay attention को समाप्त to yourself, and you will then be said to be a true server. तब कहेंगे Slogan is to bring about unity in diversity, to rectify anything that has been spoiled is the biggest speciality of all. सबसे बड़ी विशेष Avyak signal, finish the seed of impurity and become completely clean means pure. When the vice of impurity doesn't disturb you,
in your dreams or thoughts, संपूर्ण you can then be said to be doubly non-violent. स्पष्टता Constantly be aware of brotherhood easily and naturally. स्वपन व That संतुलन is, में भी be an embodiment of remembrance. डबल Never come down from your complete and Satapradhan stage and thereby commit suicide. To come down from your original, virtuous, and powerful form of being a soul means to forget, and that would be accumulated in the account of sin. ये भी पाप के खाते में Om Shanti. Thank you, Baba. आज दादी जी की 11वीं विशेषता है। दादी पवित्रता की देवी थी। पवित्रता के योग बल से उन्होंने स्वयं में सर्व शक्तियां धारण की। इसी से सभी विकार भी खत्म हो गए, अवगुण भी चले गए। तो हम सब भी दादी जी के समान ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो बाबा मेरे को निमित्त बनाकर आपे ही सेवा कराए। सेवा के चिंतन में भी माया घुसती है। चिंता कोई नहीं है, लेकिन चिंतन में माया कैसे आती है वह अच्छी तरह से चेक करना है। सेवा में भी माया आती है। क्या माया आती है? मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं होशियार हूँ। दादी की क्या विशेषता थी? हमेशा दादी एक ही बात कहती थी, बाबा जो कराने वाला बाबा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा निमित्त हूँ। दादी ने अपने को बिल्कुल निमित्त समझा। तो चिंतन में माया कैसे आती है वह अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। अपने आप को शुभ श्रेष्ठ चिंतन में रखना है। बाकी सबके लिए शुभ चिंतक रहना है। हर एक का जिम्मेवार बाबा है। हम भाई बहन हैं। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति पूरा हुआ और नेक्स्ट धार्मिक प्रभा का कॉन्फ्रेंस गुरुवार से शुरू होने जा रहा है, तो इसीलिए मुरली क्लास फिर मेडिटेशन हॉल में शिफ्ट करेंगे। कल से मुरली क्लास मेडिटेशन हॉल में रहेगा। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो।
दर्शन करे